Now, whenever we talk about globalization, if I give you a simple example today, just see. These are the two small, pictures which I got. Now, these picture itself can easily discuss and describe what is globalization. If you can see the first picture here, this is talking about what is global economy. The economy of our planet, all the economies added up. This is what globalization means, adding up of all the economies. जैसा कि अभी हमने बोला था, interlinkages of market. So whenever we say market have come together and joined themselves, the market can be the financial market, and market can also be the commodity market. So whenever the financial and the commodity market club together all across the world, they become one. We say interlinkages of the market. And here, this picture also talks about the economy of the whole planet, which have been added up. That is what we call it as global economy. The world today consists of economies that are entwined and interdependent, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी हैं. वही इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी होंगी और यही ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है. The economy of the world seen as a whole, the world comprising economically interdependent nations. इससे क्या होता है? एक दूसरी पिक्चर आपके सामने है. You can see various examples across the globe. इसका फायदा, इसका नुकसान सब आपके सामने इस छोटी सी पिक्चर के अंदर दिख रहा है. Spreading the culture. Whenever we talk about globalization, we will see in the coming slides, the culture also interming among each other. Culture आपस में जुड़ जाता है, intermingling जिसको आप कहते हैं. Example is, you are eating the burgers today, McDonald's. That is not Indian culture, but that is more of American food, which is coming in India and being spreaded like anything. Nike, Simpson. Decreasing power of nations. आज पॉलिटिकल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर ऑफ द कंपनीज हो गया है जो पूरी दुनिया में राज कर रही हैं. You call it as Amazon, you call it as Facebook. They are more powerful than any other small countries. Even big countries में इनका जो दबदबा है आज की तारीख में, मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. Australian Prime Minister is talking to Indian Prime Minister that Facebook is not behaving properly in Australia. That is what your power is reduced. आपको Facebook के सामने दिक्कत आ रही है. सोचिए, इतना बड़ा देश. That is what the problem is. Increasing global movement, movement of goods, movement of resources, movement of people, movement of even capital, movement of information. This is all moving just because we are joined together. That is globalization. Increasing cross-border exchange, social, culture, economical, political, technological, environmental exchange takes place nowadays among the nations. Decreasing distance, जितना ज्यादा हम लोग जुड़ चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और यूं भी जो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिली हैं इतनी फास्ट हैं कि आज हम पलक झपकते ही दूसरे देश में पहुंच जाते हैं. विद इन फ्यू आवर्स यू हैव रीच फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. इतना सोचने की, इतना बनाने की जरूरत ही यूं महसूस की गई क्योंकि आप जुड़ चुके हो. Increasing instantaneous communication. The communication has spread so fast. Increasing influence of global media network. Increasing power of वॉइस. अल्टीमेटली हर चीज आपस में जुड़ चुकी है. वहां के एनजीओ इंडिया में आके बोलते कि आप ऐसा करिए, ऐसा मत करिए. नाउ इफ यू लुक ऑन टू द सिंपल एग्जांपल ऑफ टोयोटा, ये सबसे सिंपल एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का है. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये केवल मार्केट में माल बेचना नहीं होता, मार्केट से माल खरीदना नहीं होता. ये भी कहलाता है कि आप दुनिया के एक कोने में माल बनाइए और दुनिया के दूसरे कोने में माल बेचिए. So you have been finding that Toyota is having factories in so many nations across the world, including Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Mexico, US, even Belgium, France, Portugal, South Africa, Turkey, UK, Australia, India, Indonesia, Japan, Philippines, Russia and Thailand. ये यहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज हैं. सोचिए,
पूरी दुनिया में इनका माल बिकता है। ये जो स्लाइड आपके सामने दोबारा से है, दिस इज टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मैकडोनल्ड्स। ये जितना भी लाल कलर आपको दिख रहा है, ऑल द रेड कलर इज नथिंग बट द कंट्रीज, द कॉन्टिनेंट्स आई शुड से, हैविंग मैकडोनल्ड्स अक्रॉस द ग्लोब। देखिए पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह छूटी नहीं है जहां पे मैकडोनल्ड्स हमको नहीं दिखता है। More than 13,381 chains, or you can say outlets of McDonald's is in US. Being a US company, naturally उसको सबसे ज्यादा वहां होना जरूरी है। उसके बाद जापान में you will find 3,500, Canada you have 1,400, Germany, UK, China, Norway, Denmark, Ireland, Eurozone, US, everywhere you will find McDonald's. और इससे ज्यादा मजे की बात यह है, Starbucks coffee is having its number of stores more than 15,000 in United States, around 5,000 in China, then Canada, Japan, Korea, UK, Mexico, Turkey, Taiwan, Indonesia, Philippines, Thailand। कोई ऐसी जगह है दुनिया की जहां पे ये लोग नहीं है? और इनका कंपैरिजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब होता है, और ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रहा है, दैट अ कॉफी from Starbucks is having the inclusion of around 19 different countries. एक स्टारबक के कप में लगभग 19 देशों का योगदान है, चाहे वो कॉफी बीन आपके लिए हो, चाहे वो पेपर के कप जिसके अंदर आप कॉफी पी रहे हैं वो हो, चाहे वो शक्कर ही क्यों ना हो। You can see here around 19 nations being involved in a single cup of coffee from Starbucks. You can see that green bubbles. If you can look on to green bubbles, these green bubbles are, the existence of Starbucks in some or the other way in different nations across the globe. ये जो green arrows आपको दिख रहे हैं, ये बताते हैं कि कॉफी बीन स्टारबक्स कहां से लाता है। पेपर सोर्स की जब हम बात करें कप्स के लिए, तो वो लाल कलर के, द रेड एरोज विच यू कैन सी इज रिफ्लेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ पेपर फॉर द कप्स विच Starbucks procured to sell its coffee. And if you talk about sugar, the orange light color arrows which you can see in the cup is nothing but the sources of sugar. नीचे जो छोटा सा लिखा हुआ है जिसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं और आप देखिएगा ग्लोबलाइजेशन का सच्चा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अ सिंगल कप ऑफ स्टारबक्स कॉफी कैन डिपेंड अपॉन एज मैनी एज 19 डिफरेंट कंट्रीज between the coffee beans, the milk, the sugar, and the paper cup. Starbucks coffee is a global hub that connects some of the poorest countries in the world with some of the wealthiest. यही कंपनीज जो होती हैं एक छोटे से छोटे गरीब से गरीब देश को एक अमीर से अमीर देश के साथ जोड़ने का काम करती हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ग्लोबलाइजेशन का हुआ है। उसी के पैरेलल आपके सामने रेड कलर के जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड्स। So if you look upon probably the single most visible symbol of American influence worldwide is nothing but McDonald's. McDonald's has over 31,000 restaurants in 118 countries, employing more than 1.5 million people. Can you believe that? Despite its 13,000 restaurants in US, McDonald's is slipping at home. अब इसका negative aspect है कि it's not able to grow itself nowadays. Its customer satisfaction has gone down, but that is not so important for us at the moment. We are more concerned about how McDonald's has been able to expand itself, including all the nations across the various continents. Can you believe that? उनकी सेल आप देख रहे हैं, ये तो बहुत पुराना डायग्राम है, लेकिन जो इनकी सेल 2003 में ही अगर आप देखते तो 41 बिलियन की सेल्स आपको दिखाई देती है। आप ये इमेजिन करना छोड़ दीजिए कि जो जीडीपी ऑफ अफगानिस्तान है वो 21 बिलियन है, और मैकडोनल्ड की सेल जो है वो 41 बिलियन थी 2003 में। सच एन ओल्ड एग्जांपल, बट स्टिल कैन यू कंपेयर द